Hello everyone, welcome to UPSC Academy for Civil Services. This is a video on daily topic-wise news analysis where I'll be covering the news from the Hindu and Indian Express. So I'll be covering the most important news of the day, and additionally I'll be supplementing the content of the news with some relevant information that can help you in prelims and mains examination. So let's get started with the topic first. Today is 20th of March. The first is Covaxin. This is basically the Covax vaccine plan and concern. This would be the third vaccine that would be coming to India. The second topic is Pew Research study on the COVID-19 impacts in India. Third, Lok Sabha passes Mmdr bill, that is mine bills, which is there in the news. The second last is aims to study efforts of Gayatri Mantra and Pranayam on the COVID-19 patients. And the last is US-China spar in the first face-to-face meeting. So the meeting which was recently concluded between US and China does not end in any conclusion. Right? Apart from this, there will be some MCQs question that is going to help you in the prelims examination, and definitely this will give you an edge in the upcoming part. And we would like to announce you that we have launched prelims mock test. This will be coming up very soon on 18th, 28th and 11th. Right? So what you can do, you can participate free of cost. So this is an online open mock test. This will be open to all, and the pattern is strictly in accordance with the UPSC. So what you have to do, you have to just check the description section of this video where I've provided a link for the registration. You can register yourself and participate in the question answer, or basically in the open mock test. Now the first news, that is Covovax vaccine plan and the concern. The news has been reported in Indian Express explain page, and it talks about the efficacy of the vaccine and the future plan. So this is important for your general studies paper 2, issues related to development and management of health. So in August only, the Serum Institute of India has been given the license to manufacture the supply of vaccine for low and middle income countries, right? और दैट ऑल्सो इंक्लूड इंडिया. तो सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को परमिशन दी गई है कि वो वैक्सीन बना सकते हैं. दिस वैक्सीन इज कोवोवैक्स. बात करें सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की, so their CEO Adhar Poonawala, they have planned to start the bridging study of the Covaxin soon, right? They would be starting the facility जहाँ पे अभी एक वैक्सीन जो कोविड शील्ड है वो बनाई जा रही है by the Serum Institute of India, right? Now the other vaccine, that is Covaxin, that is being developed by भारत बायोटेक. और अब जो सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है वो दो वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग करेगी. एक तो वो कोविशील्ड ऑलरेडी कर रही है, दूसरा वो कोवोवैक्स को करेगी. Now it will be stockpiling doses of the vaccine that would be starting from April. So the official confirmation coming from the CEO of SII, that is Serum Institute of India, उन्होंने कहा कि अप्रैल से वो सारे डोजेस को स्टॉकपाइल करना स्टार्ट कर देंगे. Now what is Covovax? If you talk about what exactly it is, तो जो Serum Institute of India जिस वर्जन को यूज करी है, that is like NVX Cov 2373. This is the actual version that Serum Institute of India would be manufacturing, and this is basically a protein-based COVID-19 vaccine जो कि developed की जा रही है Novavax, which is situated in USA. Right? The headquarter is there in US. So this is an American-based company. और जो एग्रीमेंट हुई है ये एक्सपेक्टेड है that they would supply the minimum 1 billion doses to this vaccine in the low and middle income countries as well as India. So Serum Institute of India has been obliged that they would be delivering, they would be finally giving 1 billion doses to the middle and low income countries as well. Now how does it work? Like if you talk about the things and basically the point of functioning, so how does it work? The Covovax target is like it spike protein. Basically क्या करते हैं, जो भी spike protein होती है, we have told you how the spike protein works. So this is basically the spike protein, right? So the spike protein on the surface of the SARS-CoV-19, जिसके बाद वो अपनी चीज़ों को penetrate करती है, जो प्रोटीन है वो allow करती है वायरस को penetrate करने to the human cell. Now अगर बात करें Novavax की, so this has been achieved by engineering the copies of spike protein lab using the cell of moth, right? These are the chemical process, these are the biological process that you actually do not need to know, right? इतने in depth में आपसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे. Now once the person is given a shot of the vaccine, their body is expected to recognize these copies of the spike protein as the foreign substances build immunity against them, right?
सो वंस द वैक्सीन हैज बीन एडमिनिस्टर्ड, जो स्पाइक प्रोटीन है वो अल्टीमेटली फॉरेन पार्टिकल से हमें मदद करवाती है, या इट एक्ट एज अ डिफेंस बैरियर टू इट. Now, when the real virus tries to infect the cell, the body is expected and able to fight it off, right? So this is how immunogenicity is being generated in the body, and accordingly, body shows a response against the foreign virus. Now, talking about the efficacy of the Cova vaccine, so this is 96.4% efficient. Coming to the other vaccine, अगर आप कोविड शीट की बात करेंगे, that is also 94%. जो भारत बायोटेक की कोवैक्स है, that is again 95%, 95 to 94% की उनकी भी रेंज है. सो समवेयर सारे वैक्सीन की एफिकेसी 95 से 96, 97 के आसपास रही है, राइट? दिस वाज फॉर द ओरिजिनल स्ट्रेन्स ऑफ द SARS-CoV-2. ना टॉकिंग अबाउट द म्यूटेटेड वेरिएंट्स, जो नई म्यूटेशन यूके में मिली थी, उसमें एफिकेसी रेट देखी गई है 86.3%. एंड इफ यू टॉक अबाउट द पेशेंट्स हैविंग HIV प्लस कोरोना, राइट, जो कोरोना और HIV दोनों के पेशेंट्स हैं, उनमें जो एफिकेसी रेट है वो 55.4% की है. दिस इज फॉर द साउथ अफ्रीका कंट्रीज वेयर द ट्रायल हैज ऑलरेडी बीन कंडक्टेड, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट द एफिकेसी. तो मैंने आपको 3 एफिकेसी बताई है. नॉर्मल कंडीशन में 96.4, नई म्यूटेशन जो वायरस थे कोरोना वायरस के यूके वेरिएंट में, उसमें 86.3, एंड कोरोना वायरस प्लस HIV नेगेटिव पेशेंट्स में द ट्रायल इट शोज 55.4% in South Africa countries. Now, are there constraints in making the Covax? क्या constraints आ रहे हैं, खास करके अगर Serum Institute of India की बात करें. So their CEO has said that the ability of the vaccine maker scale ups to the production as expected. और ये कुछ चीज़ें जो US की तरफ से चीज़ें प्रोवाइड की जा रही है, लाइक रॉ मटेरियल जो है उसमें कुछ इश्यूज आ रही है. सो Serum Institute of India का कहना है कि they completely rely on the US than the part of plastic that they are getting, right, for the packaging. And SII plan to stockpile the Covaxin, that is starting from April, reporting upward of 40 to 50 million doses a month. So this is how they are trying to make. But जहाँ तक बात की जाए, जो उनके बेसिक रॉ मटेरियल्स हैं वो US से उनको इम्पोर्ट करनी पड़ती है. सो यहाँ पे थोड़ी कंस्ट्रेंट आ सकती है, राइट. Now coming to the other news, that is Pew Research study on the COVID-19 impacts in India. This is one of the important research coming up after the post-COVID-19 pandemic, and this will help you to understand many things. A direct question can be asked in the mains examination, and even if you're appearing for this time prelims exam, basically अगर आप prelims में पूछ रहे हो वहाँ पे भी important है, और अगर personality test में भी आप जा रहे हैं तो वहाँ पे भी इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं. Now, according to the analysis by the Pew Research Center, जो मिडिल इनकम कंट्रीज है, खास करके अगर इंडिया की मिडिल क्लास की बात करें, दे हैव बीन श्रिंकन ड्यू टू थर्ड, एंड दिस इज ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक रिसेशन. तो 1/3 तक अगर बात करें, 30% तक के जो लोग हैं जो उस कैटेगरी में थे, उनमें रिडक्शन देखी गई है. आई विल शो यू अ ग्राफ दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड. द नंबर ऑफ पुअर पीपल अर्निंग इज लेस देन 150 पर डे, एंड दैट हैज डबल्ड, राइट. सो ऐसे लोग जो 150 रुपीज़ से कम कमा पाते हैं, उनकी जो परसेंटेज है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है. दैट मीन्स द नंबर ऑफ पुअर इन कंट्री हैज़ अगेन राइजन, राइट. इन कंपैरिजन अगर चाइना की बात करें, सो चाइना रिलेटिवली हैज़ अनसेकन. वहाँ पे सिर्फ 2% तक की ड्रॉप देखी गई है मिडिल क्लास पॉपुलेशन में, बट इन इंडिया इट हैज़ बीन सीन 30% के आसपास की पॉपुलेशन जो इम्पैक्ट हुई है सीवियरली. नाउ everything was because of the lockdown, because it was reported कि जो वर्ल्ड बैंक की projections थी, वो इकोनॉमिक ग्रोथ की जो estimates थी, उन्होंने COVID-19 से लिए हुए थे. and the lockdown has triggered the pandemic, resulted in the shut business, right, like lost job, failing income, plunging into the Indian economy into the deep recessions. So because of COVID-19, its repercussion was there in many sector, but as it has drastically hit the job, loss of basically business, falling in the income. These were some of the major repercussions that we have seen amid the COVID-19 pandemic. Now, if you talk about China, China ने बहुत हद तक अपने contraction को control किया है. Their growth is slowed, but they're not in the negative. Now, the middle class की अगर बात करें इंडिया में, that is estimated to shrunk by 3.2 crore in 2020 as a consequences of lockdown. तो इतनी population of 3.2 करोड़ जो ऐसे मिडिल क्लास लोग थे, वो श्रंक होके बहुत ज़्यादा कम हो गया. सारे लोग पुअर कैटेगरी में वापस से चले गए.
Now this is a graph that will help you understand. If you see, this blue bar is for pre-pandemic projection and this is post-pandemic projections. तो पहले जो लो इनकम में लोग कैटेगरी में आते थे, that was 119 million people थे. Now अब वो आगे बढ़ करके आप देख सकते हो, this is no poor category has risen. It was earlier 5.9, but post pandemic it is 13.4. You see the number. And talking about the middle income, earlier it was 9.9, now it is 6.6, right? So इतने करोड़ जो people हैं, they are missing. और ये बहुत सारी problems हुई है because of the lockdown, and it has severely impacted many MSME जो भी small businessmen थे, उनको बहुत ज़्यादा इसका impact हुआ है. तो make sure आप इस तरह के points ग्राफ फॉर्मेट में अगर दिखा सकते हैं तो आप एग्जाम में बना सकते हैं. Now increase in the demand of Manrega because the job loss, people are engaging in the Manrega as well. So the number of people who are poor in India has become like उसके जो खास करके daily income की बात करें, this is less than $2, right? And this is estimated to increase by 7.5 crore people because of the COVID-19 pandemic. जो number है वो काफ़ी ज़्यादा increase हो रही है. So this account for nearly 60% of the global increase in the poverty. Now, as a report, there is estimated increase of almost 6 crore to 13.4 crore people that they are seeking. So, poor people की जो number है पहले 6 crore थी, now it has rose to 13.4 crore. Now, it was noted कि जो spike हुई है मनरेगा में participants में, that is a proof कि जो poor है that is struggling to find the job. ऐसे लोग they are not actually skilled, they find it very problematic to get a job. Now about the Pew Research Center, कैसे ये चीज़ें काम करेगी. तो Pew Research Center is an American think tank. Basically ये एक American research think tank है, US based है वॉशिंगटन में, और ये प्रोवाइड करती है information regarding social issues, public opinion, demographic trends and shaping around the world. पूरे विश्व में around the world the things are happening is being researched and being reported by the Pew Research Center. And it also conduct the public opinion polling that on the demographic research, media content analysis, empirical social research, right? So these are the things that is being conducted by the Pew Research Center. So if you want to read more about the Pew Research facts, so this is an article that is there on their official page. So मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दे दिए हैं, आप इसमें डायरेक्टली इस पेज पे रिडायरेक्ट करके पूरे डिटेल में जो प्यू रिसर्च सेंटर ने जो एनालिसिस की है उसको आप पढ़ सकते हैं. तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन को चेक कर लें, मैंने इसके लिए उसके लिंक वहाँ पे डाल दिए हैं. Now coming to the other news, that is Lok Sabha passes MMDR amendment bill. So this is basically the mine and mineral development bill that was passed. So this is again important for your general studies paper 2, और इस तरह के बिल आपके prelims examination के लिए काफ़ी ज़्यादा important है. Now the Lok Sabha has passed the bill which was earlier been passed by the Raj Sabha, and we have discussed also कि एक बार ये पास होती है तो उसको न्यूज़ में भी डिस्कस की जाएगी. So we are discussing this, and the amendment aims to create a job, and this would allow the private player to enhance the technology into the mining sector. So what government is doing, they are trying to incorporate the private sector into the mining sector. बट उसको लेकर के बहुत सारे कंसर्न्स भी रेज किए गए हैं अपोजिशन की तरफ से कि ये प्राइवेटाइजेशन को कहीं बढ़ावा दे सकती है, राइट. बट गवर्नमेंट हैज़ देयर ओन चेक एंड बैलेंसेस. दे आर सेइंग दैट दिस इज ओनली टू प्रमोट बेसिकली इन्वेस्टमेंट एंड क्रिएशन ऑफ जॉब्स. सो दिस वुड डेफिनेटली बूस्ट द रिफॉर्म. आई ट्रूली एग्री दैट एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, बट वी हैव टू मेंटेन जो बैलेंसेस हैं, खास करके जो मिनरल्स के प्राइजेस हैं उनको मेंटेन करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होगा. So the reform would generate 55 lakh direct job and indirect job. इतने direct और indirect job create हो सकते हैं, and this would enhance the mining activity in the government. That would allow the private sector ताकि वो अपने advanced technology के साथ mineral exploration पे काम कर सकते हैं. But यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि सिर्फ प्राइवेट कंपनी अपने प्रॉफिट के लिए काम ना करे, अपने पॉजिटिवली के लिए काम ना करे, बल्कि वो नेशन डेवलपमेंट में भी काम करे और जो उनकी शेयरिंग है वो अपने एम्प्लॉयज़ या फिर नेशन डेवलपमेंट में ज़रूर करें. Now currently India produced 95 minerals and has same potential like South Africa, Australia. ये जितने भी कंट्रीज़ में जो मिनरल रिच कंट्रीज़ हैं उनके जितना पोटेंशियल इंडिया के पास भी है, बट द ओनली लैकिंग इज टेक्नोलॉजी. We do not have the advanced technology. So India still need to import the gold and coal. So we are still importing on that part. But एक बार अगर एक्सप्लोरेशन बढ़ती है तो हो सकता है गोल्ड और कोल में भी हमें बहुत हद तक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है.
Now, contributing of the mining sector in the GDP, if you talk, presently mining sector जो है वो 1.75 of the GDP को contribute करती है, और इस बिल के बाद ये ऐसे एंटिसिपेशन लगाई गई है कि this can increase to 2.5%, right? And bill remove the distinction between the competitive and non-competitive mines. जो पहले competitive non-competitive mines से इनको हटा दिया गया है, and it seeks to introduce an index-based mechanism in developing the national mineral index. तो एक NMI डेवलप की जाएगी जो कि स्टैट्यूटरी पेमेंट्स को भी ध्यान में रखेगी. Now the National Mineral Exploration Trust and METS को कहते हैं, that's aimed to see the function of the sector and would be as an autonomous body. So एक वॉचडॉग के लिए गवर्नमेंट ने नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट भी बनाया. So this can be again a very possible question for the prelims examination. Now for this bill I have also linked down the description में मैंने इसके लिए इस बिल के लिंक दे दिए हैं जहाँ के डिटेल में आप पढ़ सकते हैं, राइट. So what you have to do, you have to just refer to the description section of this video. वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाएं, आपको ये लिंक मिल जाएगी, वहाँ से डिटेल में आप पढ़ सकते हैं. मैंने PRS इंडिया के लिंक दी है जो कि बहुत ही अच्छे से कवर की हुई है इसमें. Now aims to study the effects of गायत्री मंत्र एंड प्राणायाम. सो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस जो है उन्होंने कुछ फंडिंग दी है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट अगेन फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. तो इसमें जो मेन न्यूज़ है वो ये है कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी दे आर फंडिंग द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रिसर्च की, जो खास करके ऋषिकेश में एम्स है. एम्स ऋषिकेश को उन्होंने फंड किया है कि वो इस चीज़ पे एक कंक्लूजन दें, एक रिजल्ट दें, एक रिसर्च करें कि क्या गायत्री मंत्र और जो योगा प्रैक्टिसेस हैं दैट इज ऑल्सो कॉल्ड प्राणायाम, उसकी कोई इफेक्ट है इन रिकवरी ऑफ द कोविड-19 पेशेंट्स, राइट. सो दिस इज हाउ the research has been taking place by the AIIMS, and the Ministry of Science and Technology they would fund for the trial of the COVID-19 patients, right. So this is a good news that advancement can come in another part, basically we can see the other segment of recovery in the COVID-19 patients. Now clinical trial की बात करें तो ये रजिस्टर्ड की गई थी इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च के द्वारा, जहाँ पे 20 कोविड-19 पेशेंट्स को रिक्रूट किया गया है फॉर मॉडरेट लेवल, और इसमें दो ग्रुप में लोगों को डिवाइड किया जाएगा. वन ग्रुप विल गेट द स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट अलॉन्ग विद द बेसिकली जो भी स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है वो प्रोवाइड की जाएगी, और दूसरे ग्रुप को ऐसे नॉर्मल कंडीशन पर रखे जाएंगे ताकि जो चेंजेस हैं वो देखे जा सके, योगा इंस्ट्रक्शंस पे कितने फ़र्क पड़ रहे हैं, प्राणायाम से कितने फ़र्क पड़ रहे हैं. सो दीज थिंग वुड बी टेकन केयर ऑफ इन द क्लिनिकल ट्रायल्स. Now, जो लेटेस्ट स्टडी है दैट वुड नॉट टेस्ट द एफिकेसी ऑफ इंटरवेंशन ऑफ द सीवियरली इल पेशेंट्स. तो जो इल पेशेंट्स हैं उनके लिए कोई जानकारी भी नहीं मिलेगी, एंड इट विल ओनली इवेलुएट द डिफरेंसेस इन द ग्रुप द टाइम टेकन टू द नेगेटिव टेस्ट इन द हॉस्पिटल स्टे, एंड वुड ऑल्सो इवेलुएट वेदर दे वुड हैव टू रिड्यूस द फटीग एंड एंजाइटी. क्या उन लोगों को कुछ एंजाइटी में कमी आई है, फटीग में कमी आई है, वेदर दे आर कैपेबल एनफ टू हैव द फिजिकल स्ट्रेंथ. एवरीथिंग वुड बी टेकन केयर अंडर दिस ट्रायल. Now the other news that is US-China spar in the first face-to-face meeting. So recently a meeting हुई थी. We'll discuss what is there, but this is important for the General Studies paper 2, and important for General Studies paper 2 में आपको मेंस में ज़्यादातर इससे सवाल पूछे जा सकते हैं, राइट. मेक श्योर आप मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ही इनको देखें. So एक मीटिंग, recent meeting, first meeting after the Joe Biden has taken the presidentship, ताकि चाइना के साथ जो एक रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है यूएस की, उसको रीसेट किया जा सके. सो दोनों तरफ से ऑफिशियल ने मीटिंग की, बट बहुत कंक्लूसिव रिजल्ट नहीं रही, अंडरस्कोर्ड रहा ये, एंड दैट हैज़ अनदर लेवल ऑफ बायलैटरल टेंशन. सो इन अनयूजुअल पब्लिक रिमार्क, जो खास करके यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, उनका कहना है कि चाइना के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, उसको हमें रिजॉल्व करने की ज़रूरत है, एंड बोथ कंट्री नीड टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग. ना कुछ रेंजेस ऑफ इश्यूज थे जिसको डिस्कस किए गए, and US has categorically said that the meeting called for a new test in increasing the troubled relationship between the two countries, जो कि डोनाल्ड ट्रम्प के टाइम से कंटिन्यूड है, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज लाइक ह्यूमन राइट इन ताइवान, तिब्बत, हांगकांग, चाइना जो कि वेस्टर्न जीजेंग रीजन है वहाँ पे जो ताइवान को लेकर के इशू है वो वाली प्रॉब्लम्स, चाइना की assertiveness in the South China Sea because China is trying to dominate in this region. Coronavirus pandemic, the blame has been given to China because it started from the Wuhan, and China's increasing authoritarianism and assertiveness at home and abroad, right? So these are some of the things that was discussed, and these were the range of the issues that US has raised.
नाउ चाइना ने अपने तरफ से कुछ स्टैंड दिखाते हुए कहा है कि दे हैव अक्यूज्ड यूएस ऑफ फॉलोइंग द डील विद द ओन ह्यूमन राइट प्रॉब्लम. दे सेड कि यूएस हैज इट्स ओन ह्यूमन राइट प्रॉब्लम, and China also said that United States too need to change its image to advance its own democracy and the reset of the world. So these official statement coming from Chinese side, and many people within the United States actually have little confidence in the democracy in the United States. So this is what the China stand was, but this was not very conclusive. Every country had their own setup, अपने तरीके से चलाते हैं, but जो मेजर प्रॉब्लम है उसे डिस्कस करने की जरूरत है, उसे रेक्टिफाई करने की जरूरत है. Now the way forward, what you can write in examination, अगर यूएस चाइना की बात करें टाइज की, सो बहुत हद तक जो नई गवर्नमेंट है, नई प्रेसिडेंटशिप है जो बाइडेन की, दे आर ट्राइंग टू रीसेट इट, which was again being severely impacted by the previous president of Donald Trump. और जो ये relationship है, ये disintegration है after the coronavirus pandemic and the Wuhan provinces across the globe that has unleashed public health and economic disaster. So definitely each and every country have been severely impacted. India is the country which has among the worst hit. सबसे ज़्यादा जॉब लॉस हुई है इंडिया में. तो इस तरह की चीज़ों की रिकवरी कैसी होगी, क्या ब्लेम गेम से काम बनेगा या फिर द गवर्नमेंट हैज़ टू टेक द कंक्रीट एक्शन, this would be the right time for government to decide and China to take the moral responsibility of it, right? So this is the way forward which you can conclude. Now coming to the MCQs question of the day. The first question is from the National Science Day. National Science Day is celebrated every year to commemorate the discovery of Newton law. A theme for 2021 is the future ready, science and technology innovation impact on education, skill and work. So what you have to do, you have to just write your answer in the comment section. बहुत ही सिंपल तरीका है. आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाएं. अगर आप फ़ोन पे देख रहे हैं तो आप फ़ोन के कमेंट सेक्शन, वीडियो पे ही नीचे कमेंट सेक्शन है, वहाँ पे जा करके आप ABCD फॉर्मेट में अपने आंसर करेक्ट लिख सकते हैं, राइट. Now coming to the second question, National Institution Ranking Framework. Niti Aayog established the National Institution Framework in September 2015, and this framework outlined the methodology to rank institution across the country. So again, you have to choose the correct option and write that in the comment section. If you want to share additional information, आप वो भी हमें comment section में लिख करके बता सकते हैं, right? So do share your valuable comments there. And if you're new to our channel, do not forget to subscribe Apti Plus Academy for Civil Services on YouTube. And if you like this video, if you find this video helpful, do not forget to give thumbs up. If you have any other concern, do let us know. We'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Wish you all the best. Thank you so much.